Hello aspirants, welcome to Abinash Pathshala. Union Public Service Commission रो Civil Service Exam ପାଇଁ notification ଆଜି ଆସିଗଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି and I will let you know the detail କି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ eligibility criteria କି apply କରିପାରିବେ କେମିତି apply କରିବା plan of examination ଭିତରେ number of vacancies attempts विषୟରେ ସବୁ विषୟରେ ଏଇ ସେସନରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ତ चलो फटाफट मु तुमको सहित स्क्रीन शेयर करुच्ची और तुमको आग नहीं जावाक चाहिए साइट को upsc.gov.in रे जिते जाऊँ से व्हाट्स न्यूज सेक्शन रे तुमने पाइज एग्जाम नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 आउ से क्लिक कला पर यू विल फाइंड दिस पीडीएफ जोटा मु ऑलरेडी तुमको डाउनलोड करके रखी सो ये यू कैन सी इटा आजिर आजिर नोटिस जस्ट किसी समय आगु आसी तो ये अप्लाई करने तुमको यूपीएससी online.nic.in रे जीवार अछि या सही पोर्टल रो डायरेक्ट आपण माने लिंक मिल जिवो जोडा मु लास्ट देखे देबी तुमको देन यू हैव one time registration platform will be there available on the commission website then proceed for filling online application form OTR has to be registered only once in lifetime this is very important you have to remember गोटे थर मात्र मन एटा रखो गोटे थर मात्र ये ओटीआर टाको फिल करिवार अछि दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही और सी कैन प्रोसीड स्ट्रेट अवे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सो इट्स वेरी इजी ओटीआर इज लाइक इट विल मेक यू नो इजी एक्सेस टू फिल द फॉर्म सब किसी डिटेल फिल हेकि डायरेक्ट अप्लाई आसी जीव मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर In case the candidate wants to effect any change to his OTR profile, it shall be allowed only once in the lifetime. थोड़े मात्र OTR change करी परिबा. धर किसी गोटे भूल तमे देइछो ये फोटो चेंज करियो को चाहछो दैट फोटो चेंज तो परिबो. जदि किसी गोटे डेटा तमे भूल देइछो या चेंज करियो को चाहछो दैट यू कैन चेंज ओनली वंस. The change in OTR profile data shall be available till the expiry of 7 days from the next day after the closure of application window. Okay? तो कौन रही ये तो दिस विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 7 days डेट ऑफ ओपनिंग इन द सेम 22 तारीख रु 28 तारीख सो दिस इज द थिंग ओटीआर जो मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे से मैंने आराम से फिल करंतु लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 February टिल 6 PM तो आज जदि आसी फॉर्म जदि यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इट देन गो फॉर इट गाइस बेसी लेट करियो दरकार नहीं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी for wrong answer marked by a candidate objective type paper तो मु डिटेल को आसले सेटा कहि देबी तमनको mobile phones ban these are the things you all know and the services which are provided in this post तमने समस्त देखि परतो IAS जोटा बहुत जन को ड्रीम जॉब थाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस IPS ऑडिट ऑफिसर एमते करी की देयर आर यू नो 21 पोस्ट जोटा मेंशन कराइ ग्रुप बी ग्रुप ए मिसे करी तमने समस्त देखि परतो एंड ऑल इंडिया सर्विसेज विषय कोटा कोटा जानछो तुम जानछो IAS IPS और IFS फॉरेस्ट सर्विस यस तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू आउट द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1105 1105 रहबो ता भीतर 37 वैकेंसीज पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी 7 वैकेंसीज फॉर दिस सो दीज आर द थिंग सो 1105 वैकेंसी एक्सपेक्टेड वैकेंसी राइट देन IAS fine you can see category you know categories in which identified for which identified तो जो कहि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को माने अप्लाई करि परिबे यू हैव टू चेक हियर तमान कोटा देखिबार अछि राइट यू कैन गो थ्रू इट देन सेंटर एग्जाम सेंटर एवरीवेयर हम ओडिसा रे भी एग्जाम हुई कटक रे एग्जाम हुई यू ऑल नो राइट तो तमाने समस्त जानिछ कटक रे एग्जाम होछि सो हियर इट इज कटक ओके नहीं तो एग्जाम सेंटर तो मैंने चूज करी परिबो राइट देन सेंटर ऑफ सिविल सर्विस मेन एग्जाम भी कटक रे अछि हमरो प्रीलिम भी कटक रे मेन एग्जाम भी कटक रे दोछि आई थिंक हमरो आउ को ये रे अलाउ करूनी ओनली कटक इज देयर यस तो नेक्स्ट हियर इट इज हियर यू कैन सी फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलर्ट तो जल्दी अप्लाई करो सो दैट सेंटर जल्दी मिली जिवो है ना so here it is written that applicants should note that there will be selling on the number of candidates allotted to each of the centers except Chennai, Dispur, Kolkata, Nagpur
बाकी सब आड़े गोटे सेलिंग अच्छे माने एतिकी नंबर ऑफ एप्लिकेंट्स कैन बी अलॉटेड टू दिस सेंटर तेन जल्दी फिल करिवार अच्छी सो दैट यू कैन गेट दिस सेंटर अलॉटेड टू यू notwithstanding the aforesaid provision the commission reserves the right to change the center at its discretion if the situation demands the situation in royal you can change plan of examination you all know that two stages are there two stages to mane bahut sir two stage kemiti one is called civil service preliminary examination one is called main examination is having written and interview part right so written and interview part so total three part you can say so preliminary is just to check it a good qualifying exam to eligible for the mains examination main exam hi sabu kichi main written or interview applicants are now invited for civil services preliminary examination only because tapare auri form filling of the candidates who are declared by the commission to have qualified for the admission to the civil services main examination will have to apply online again and submit one line detailed application form so प्री एग्जाम पाई एबे फॉर्म फिलिंग पाई डाकी छी नेक्स्ट प्री क्वालिफाई करला परे जाई कि मेंस रो ओके so eligibility you all know nationality should be Indian then this age limit which is very important now minimum 21 years and maximum 32 years for unreserved category so it is ki as of 1st August 2023 the candidate must have been not earlier 2nd August 1991 not later than 1st August 2002. So this you have to remember. The upper age limit prescribed will relaxable up to a maximum 5 years for candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribe. Maximum 3 years in case of OBC, right? Maximum 3 years defense services personnel MTS abu achi, right? This you can check. Next mo taman ko nei jiba ko chahibi number of attempts to very important point. एटी एमितिया नहीं कि तुम्हें जिते वर्ष इच्छा सेते वर्ष तुमरो एज सरियो जाय पके परबे नाही every candidate appearing at the examination who is otherwise eligible shall be permitted 6 attempts at CSE civil service examination however relaxation will be available to SC ST OBCs and PW categories SC ST को पाई unlimited time they can apply 9 attempts for OBC and PWD पाई 9 for GL AWS and OBC unlimited for SC ST so this thing you have to remember. Then here you can say restriction on applying this a candidate who is appointed to the Indian Administrative Service or Indian Foreign Service based on the result of earlier examination continues to be a member of state service will not be eligible to appear at civil service examination. तमें जब highest post already पाई साचो आउ थोड़े apply करी तो you are restricted from this in case such a candidate is appointed to IAS or IFS after the civil service preliminary examination 2023 is over the candidate continues to be a member of that service the candidate shall not be eligible to appear the civil services main examination notwithstanding having qualified to the civil service preliminary examination this you have to remember बाकी जो माने IPS होइचंदी या जो बाकी दो तळे पोस्ट कोडा को रहला से गुडा हे सारी भी तो माने अप्लाई कर परियो because you can go for the higher post fee कथा जति देखिबा you can see here only 100 rupees will be there charged to this except female SC ST person with benchmark disability बाकी समस्त 100 टंका लागु छी ओके फॉर्म फिलिंग रे तो हमें आसी जीवा डायरेक्ट प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को मुने जीवा को चाहिबी एंड सिलेबस को देखिबा को चाहिबी तमन को हियर यू कैन सी section 1 that is plan of examination the civil service area come 2 successive stages this preliminary and mains now let me show you yes preliminary examination comprise of 2 compulsory paper of 200 marks both the question paper will be of objective type multiple choice question each will be of 2 hours duration 2 घंटा रो पेपर 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहबो गोटा 100 गोटा 80 से विषय आसे the general studies paper 2 of civil services preliminary examination will be qualifying in nature minimum qualifying marks 33% clearly mention this thing right minimum 33% in paper 2 this question paper will be said both in Hindi and English the details of syllabi are part of section 3 रा part है मतलब मन को देखिए and then main examination will be here paper A और B जो दिटा रहला one of the Indian language you can choose ओडिया हमर जो 22 टा 8 schedule है जो 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि ता विषय त माने चूज करि परिबे 300 marks there and English 300 marks then जोटा हमर OPSC रे थरो हेची syllabus you can see
माने जो पैटर्न एटा होची यूपीएससी पैटर्न सेटा को हमर एथर सो पेपर 1 ऐसे पेपर 2 3 4 5 जनरल स्टडीज 1 2 3 4 1 रे हमर इंडियन हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी of world and society, governance, constitution, polity, social justice, technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management. Paper 4 is ethics, integrity and aptitude. सब 250 mark रा और optional जोटा रहिबो तार part 1 that is paper 1 will be of 250 marks and paper 2 will be of ठीक है जी. Government strives to have a workforce with a reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. Okay, so 20-25 marks रा रहिबो हमरो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू टा रहिबो से 275 मार्क रहिबो. ओके सो हियर यू कैन सी त माने लैंग्वेज चूज करि परिबे या भितर एंड ओडिया इज हियर यू कैन सी ओडिया इज हियर राइट ओडिया स्क्रिप्ट त माने जानिछो एंड देन लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट हियर आर यू नो टोटल 26 सब्जेक्ट्स फ्रॉम व्हिच यू कैन चूज एंड लिटरेचर रे तमे को भी लैंग्वेज चूज करि परिबो तमरा. ओके देन जदि तुम प्रिलिम्स रा देखिया को चाहिबो जस्ट अ सेकंड यस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस करंट अफेयर्स जोटा कहूछु हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. देन यू कैन सी हियर इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट इश्यूज economic and social development sustainable development poverty inclusion demographics social sector initiatives. These are the parts which you have to keep in mind while preparing for this exam. General issues on environmental ecology biodiversity climate change that do not require subject specialization. Okay, and general science will be there. So these are the parts which we need to cover for paper 1 and paper 2 will be comprehension English, interpersonal skill including communication skill, logical reasoning and analytical reasoning, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeration, maths, reasoning out, computer को हमारा maths, reasoning, English को नहीं की. Paper 2 civil service examination will be qualifying in paper with minimum qualifying 33%. The question will be multiple choice, objective type. और सेटा question normally आसे हमारा अड़े mark रहता है. It is mandatory for the candidate to appear in the both the papers preliminary. Therefore, a candidate will be disqualified in case he or she has not appeared in both the papers. And paper B mains. So you can go through with this. मु एटा तमन को ग्रुप रे भी शेयर कर देबी. तमने देखि परियो समस्त किछि भी डाउट रहउची you can ask me. My number WhatsApp number is given below. So all the best guys. If you are planning to go for it, go for it. Video informative लागी छी तो निहाती शेयर करनी जो संगमान को सहित. Do like the session and do subscribe if you haven't subscribed. Thank you very much for watching. Jai Jagannath.